Dearest parents, children, and my wonderful audience, Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you. We are truly honored to have you with us today on this meaningful occasion. Your presence has added a grace to the event, and we are truly thankful to each and every one of you to be a part of this. I am Sayyida Seher Hussain, biomedical engineer working at the Transformation International Society. Dear audience, today's program is a celebration of faith, creativity, culture, patriotism, and dreams. Each performance you will see today carries a message, an emotion, and hard work of our dedicated participants. So let us begin this journey together. All the guests who have now arrived are also warmly welcomed. Now let's begin this journey formally. Now we proudly present a welcome performance where Raza Rashid, Noor Fatma, Ubaid Raza, Aiza Khan and others will welcome you through a beautiful welcome performance. Please encourage them with your claps. ہمارے لیے چلنا بہت آسان ہے، ہمارے لیے کچھ لفظ بولنا بہت آسان ہے، ہمارے لیے ہاتھ پیر موو کرنا بہت آسان ہے۔ ان بچوں کے لیے بڑا چیلنج ہے، اور یہ بچے صرف آپ سے ایک چیز درخواست کرتے ہیں کہ آپ کیسے ان کو انکریج کریں گے، اور اس انکریج یہ ہے کہ آپ ساتھ کیسے دیں گے۔ یہ بچے اس وقت جو پرفارم کر رہے ہیں ہم بچپن سے آج تک سنتے آئے ہیں، اور میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہر بندے کی دل کی آواز ہے۔ اگر واقعی آپ ان بچوں سے پیار کرتے ہیں تو مجھے ان بچوں سے زیادہ آپ کی آوازیں ضرور اس والی پرفارمنس میں سنائی دیں گی۔ Thank you participants for your energy and enthusiasm. Every child is a dreamer. ہر بچہ خواب دیکھتا ہے اور اپنے خوابوں کی تعبیر اور مستقبل کو روشن بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری اگلے پرفارمنس کا ٹائٹل بھی ہے ڈریمرز بائی محمد انس، عبد المحمد، عبد الاحد، ریان ترمذی، منیب اینڈ ازلان عمران۔ Now for a vibrant cultural song performance, I now invite Ali Mohammad Waseem, Noor Fatma, Ubaid Raza, Minha Kashif, Rafi Adnan, Aisha Khan, Aiza Kamal and Sabiuddin. Everyone please clap.
Ladies and gentlemen, that was the final act to conclude the event and showed how we celebrated our identity and patriotism. These children reminded us of our unity, strength, and pride. Ladies and gentlemen, to continue the program, I may now invite Dr. Imran Yusuf to kindly join us on the stage and share a few words. Please welcome him. I start in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, the best among you is the one who is beneficial for others. 30 years ago, when we started this journey of providing services and starting our program, Dependency to Independence, मोहताजी से खुद मुख्तारी तक. लेकिन ये जर्नी 30 साल पहले नहीं शुरू हुई थी. ये जब शुरू हुई थी जब मेरे घर में एक जन्नत का शहज़ादा, मेरा भाई, एक स्पेशल चाइल्ड था. और मैंने अपने माँ बाप के बाद उसको दुनिया से घुलते हुए जाता हुआ देखा. मेरी अपनी बहन की एक ही बेटी, उसको एज अ स्पेशल चाइल्ड मैंने दुनिया से जाते हुए देखा. एंड दैट्स ब्रॉट दिस प्रोग्राम ऑफ मोहताजी से खुद मुख्तारी तक, डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंस. एंड वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 30 years in 3 continents of the world, teaching, training. इनमें से जो बच्चे आज आपको मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, ये पहली दफ़ा ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में चले. यहाँ वो बच्चे भी हैं जिनकी जिस्मानी उम्र 24 साल और जहनी उम्र 3 साल है, और पहली दफ़ा मैं अत्ता हूँ के लफ्ज़ उनकी माँ ने सुने. यहाँ ये बच्चे मौजूद हैं, इनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं. सबसे पहले तो उन माँओं के लिए तालियां बजा दें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत दुनिया के अंदर दी है, जिन्होंने फ़ख्र से अपने बच्चों को यहाँ पे ला के दिखाया. क्योंकि मेरी माँ में ये हिम्मत नहीं थी. मेरी माँ स्कूल नहीं गई थी. जब मैं अपने भाई को बाहर लेके जाता था तो मेरी माँ कहती थी, बेटा बाहर नहीं लेके जा, लोग हंसते हैं. और मैं कहता था, माँ ये तुझसे जलते हैं क्योंकि तू जन्नत में जाएगी. बट राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन फॉर दीज पेरेंट्स कि जिन्होंने इनको एक्नॉलेज किया, जिन्होंने अपने सामने प्रेजेंट किया और इन्होंने हमारे साथ ये ताउन किया. और साथ आज कोई चीफ गेस्ट नहीं है सर, चीफ गेस्ट ये बच्चे हैं जिन्होंने चलना सीखा, जिन्होंने बोलना सीखा. और आपने कुछ वीडियो भी देखा, लेफ्ट के ऊपर इनके प्रोजेक्ट्स हैं. अगर मैं आपको आप प्रोजेक्ट्स देखिएगा जो इन्होंने डेवलप किए हैं, जो IT का काम कर रहे हैं, जिस लेवल के ऊपर ये बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, शायद हमारे जैसे बच्चे भी जो है वो नहीं कर सकेंगे. मैं ज़रूर चाहूँगा कि इन बच्चों से मिलिएगा, खाने के दौरान इनके वालिदैन से मिलिएगा, इनके प्रोजेक्ट्स भी जो है वो देखिएगा. सर ये महफिल इसलिए सजी कि जब हम हिजरत करके कनाडा से आए तो हमें बहुत अच्छे लोग मिले, और हमें मेंटोर मिले, हमें फिलैंथ्रोपी पे चलाने वाले मिले, हमें गाइड मिले. और ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि हमें जनाब कलीम फारूकी साहब मिले. तो मैं कलीम फारूकी साहब से गुजारिश करूंगा कि सर अगर आप स्टेज पे मेरे साथ आ जाएं. आज ये चमन जो है वो खिला है, कार्ड के ऊपर भी लिखा था जश्न बहारा नन्हे फरिश्तों के साथ. तो आज यहाँ भी फूल हैं, यहाँ भी फूल हैं. यकीन माने इस आधे घंटे के अंदर आपके अंदर भी फूल जागे होंगे. भरपूर तालियों में जनाब कलीम फारूकी साहब से मैं रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट Honorable Kaleem Faruqi, who is also the board member of Transformation International, who is also the supporter, his entire family. Welcome, Mr. Kaleem Faruqi Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. What a gathering on a weekday. Tomorrow is the working day. ये बहार, पर इनसे बढ़ के जो बहार मैंने आज देखी है वो ये है. ये असल मानों में सही बहार है. इमरान ने अपने वालिद का बताया कि अपने बहन भाई को ये बाहर ले जाते थे तो वो मना करती थी, और उन्होंने कहा नहीं वो इसलिए जलते हैं कि आप जन्नत में जाएंगी. इसने भी अपने लिए जन्नत बना लिया है. दूसरी एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, ये बहार को सब देखते हैं और बड़ी तारीफ करते हैं, रंगों की तारीफ करते हैं, खुशबू की तारीफ करते हैं, पर पता उनको ये नहीं है कि इसको होल्ड किसने किया है. जड़ों में, अंधेरे में, गंद में. उसकी तारीफ कोई नहीं करता. वो जड़ इमरान है. Let me tell you, for my friends in English, there was he spoke about his own brother and sister who were handicapped. And his mother used to tell him not to take them outside, but people would laugh.
and he would tell his mother, "Don't worry, they are jealous. Because you are going to heaven for raising these children. And there are many who are sitting here raising their children like this." That's the quality this man has developed. And we are not only just celebrating 30 years of this reformation. It's a concept that we are celebrating. And this all has been made possible by the donors, the patrons that he has in this organization, looking after him. And I feel proud that this evening he called his own, friends, acquaintances to my place here, and I could offer my place to him to promote. And please let the people know there are people like him who, despite all the adversities in this country and in this city in particular, aiming to do what he is. And I'm sure Dr. Saab, inshallah, will have that building. The project which you have already seen, the system which we have implemented, I have said to a media as well, that this system, which was a part of my dissertation of my postdoctorate Doctor of Letters DLit program, which was published and launched by House of Commons UK Parliament last year. And then our host, who was the MP of UK Parliament, was Ruth Cadbury, was saying, Dr. Imran, with NHS, with UK government, with donor agencies, we were not able to provide this technology and the system. How you were able to do this in Pakistan, and $10,000 to $15,000 worth of treatment without any cash counter and without any question. And I said, Honorable Madam, you believe in calculator and we believe in our creator. And that is the success of why we were able to do it. And indeed, there are a lot of supporters, and each and everyone personally, I would like to thank you that I know that it's not able to, will not be able to do it, but for sure I want one very, very big round of applause for my team who is actually doing it. It is a team who is, and I guarantee all of you that you offer a double salary to my team, they will not leave. Because they said, sir, हमने यहाँ सीखा है कि दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है. And I'm so proud of my dedicated team. One big round of applause for my team, because they're the one who was able to make this miracle which is not possible. मैं तो बड़े कहता हूँ कि जो किताब कहती है कि नामुमकिन है, उस किताब को जला दो, क्योंकि मैं जिस किताब को मानता हूँ उस किताब में लिखा है कि शिफा अल्लाह ताला देता है और शिफा देने वाले के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. That's the belief what we have. We have indeed a guest of honors. We are here and we are very honored that the Consul General of Japan is here, and I would like to invite him, sir, on the stage, Consul General of Japan. I would also like to invite Consul General of Thailand. I would also like to invite Consul General of Malaysia. So, sir, please join on the stage. And then I will also like to because they have to give the giveaways to these chief guests. Today is a little different. We're not going to present any shield to guest of honor or chief guest. They are the one who will be going to give. And I will definitely like to request Brother Ahmad Shah. Sir, please join, because we have a lot of children which will be very happy that they will be receiving the shields from the giveaways from you. Our board member Hussain Sajjad, I will definitely request, and if Ghazanfar Saab can come, he's our spiritual connection. If he can come, please, Qadir Bhai, please, Wakil Bhai, please, Dr. Naseem Parvez, I have requested him. He came all the way from Islamabad. Sir, if you can be here, it will be an honor for you people that you will be giving a giveaways to little angels. Sir, please. Thank you. Just a very quick announcement. I'm very thankful that Transformation International, one of the leading center of the world, and definitely no comparison to in Asia, is working as a cashless counter. And from now on, the project has been approved
and it will be now also the paperless system, first ever of rehab center which will be paperless, and which is the courtesy of Mr. Ghazanfar Sajjad Talik Group. So thank you so much, sir, for giving this, that you will be making our system entirely paperless. Thank you, sir. Everyone is welcome to please proceed for the dinner. Thank you.